Gupshup and Friday the guest day. So here's your host Gursima Preet Kaur from the courtyard of Angel Mission Deep and from the set of Gursima's Gupshup. You must be wondering what the hamper gonna reveal today. You will be hearing the beautiful classical beats as well as the motivational words and lot more. So I have a beautiful female in the studio as my guest. Over to her, Miss Shruti, and she is not a one person with one personality and one trait. She's a multifaceted personality. Shruti, very warm welcome to Gursima's Gupshup. Thank you so much. And it was an instant notice that I have to give her, and she is here. And you're looking very beautiful with the hair and this very tone of the dress. Looking very cool. Thank you. Very warm welcome. Thank you. Shruti, there is one segment in my this interview that is Rubaru. So I would not like to introduce my guest every time instead of the brief words, the prefix I use. There is a huge journey of yours. So I just want to please share a few things about yourself that could introduce you to the audience and the viewers of this show. Please, over to you. Thank you. First of all, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और Pleasure is all mine, lady. I'm so happy आप आए तो बाहर आई. Thank you. पहले तो ये सोचने के लिए कि मैं इतनी यहाँ पे मैं आने लायक हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. Yes, you are. Because when we will गपशप के आगे जब हम चलेंगे, आप देखोगे या सुनोगे भी, she's a very good artist with especially the field of Kathak. She is such a good motivational speaker. She came to my NGO for one of the motivational lecture, and I was overwhelmed to hear her, and it was like, yes, I want you at my Gupshup show. Thank you. It was destined by God, and I hope that you will enjoy this Gupshup. Okay, Shruti, please proceed. Thank you. जैसे कि मैम ने आपको बता ही दिया है कि मेरा नाम श्रुति चंदेल है, तो मैं एक इंटरनेशनल थिएटर आर्टिस्ट हूँ, जो कि मैं 2 साल की उम्र में बन चुकी थी. तो 2 साल की उम्र में. 2 साल की उम्र में. तो I am surprised. I really want us. कुड़िए तो 2 साल की उम्र कितना किसी. Either at that times, the children could only cry, could tumble, could and the other basic things. What else? Actually, credit goes to my mom. What's good name of your mom? Her name is Madhubala. Madhubala. Wow, Madhubala. So it means जो artistry के ना artist की जो वो एक nerve है, जो एक रग है, वो already खून में थी. इसलिए because Madhubala. So Madhubala जी, you are very lucky. You have got a beautiful daughter. Please continue. Thank you. तो क्रेडिट मम्मा को जाता है कि उन्होंने मुझसे ये करवाया और मुझे ये अचीवमेंट दिलवाई. 2 साल में क्या परफॉर्म किया? एक्चुअली मम्मा ने कुछ डांस परफॉर्मेंसेस की थी और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था. मैंने डांस किया था वहाँ पे. Your mom also does dance? Okay. Yeah, she is a Kathak dancer plus she is a classical vocalist. Her degree is in MA Music Vocal. Okay, that's really nice. Yes. And so very soon, ma'am, I would like to have you at my Gupshup show. Would really like to take your interview for the magazine, and I suppose it will be again a very interesting chit chat that I could have. Okay, then proceed please. फिर मैंने अपनी मास्टर्स की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, जो कि इंडियन क्लासिकल डांस कथक में थी. So I was a gold medalist of Guru Nanak Dev University. Wow, another star, shining star added to her personality. Okay. और उससे पहले मेरी जो बैचलर्स डिग्री थी वो भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से थी और उसमें भी मैं मेरिट लिस्ट होल्डर हूँ. और audience, normally we say कि पढ़ाई में gold medalist is, you can well imagine even this young girl who is every time she has added a star to her journey. She has every time added the beautiful colors, and she bears that aura. A beautiful aura surrounds her. So it's not only the doctors and the engineers. It's again this artist has also added a lot many accolades to her career and to her journey. Thank you. तो उसके बाद बस मुझे कुछ टाइम से ऐसा लगा कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद उस एक टाइम पीरियड से गुजर चुकी हूँ जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी.
तो मुझे लगा कि जब अगर Yes, मुझे well, इस she चीज़- is a very prominent and a very accurate and very good motivational speaker. So there is a story behind it that how you became a Yes, motivational yes, speaker. yes, yes. Okay. So मुझे लगा कि अगर मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसी कुछ शब्दों की ज़रूरत होगी जो उन्हें मोटिवेट कर सके. And these days when the depression and isolation has become very common, Very common. every second person you will find is depressed due to Yes. one or the other reason. Exactly. So how you just prepare yourself to motivate people? Because I think बात करना मतलब my mom always says कि you are a very talkative person. So I was like okay. You are a chatterbox, okay? Yes, yes. So my mom always says this thing. तो मुझे लगा कि जब बात करना ही है तो फिर अच्छे वे से करते हैं. कुछ अच्छा करते जिसका कोई जो प्रभाव छोड़ जाए किसी पे. जो किसी को कोई मैसेज मिल सके. अगर मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया है तो शायद मैं किसी के लिए कोई जरिया बन सकूं वो मैसेज देने के लिए कि आप भी कुछ कर सकते So हैं. it was something inborn, Yeah, and exactly. you realized it during the peak period of your life, peak Exactly. period of the youth, that Exactly, you can always motivate people Yes. with your talks. Bilkul. So you must have covered couple of good lectures. Yes. Any figure that you remember? I started in January with some other NGO. Okay. वो लोगों ने मुझे काफ़ी देर से बुलाया हुआ था कि मैम आप आके ना कुछ डांस सिखाइए हमारे बच्चों को. Okay. तो मैं वहाँ पे जब गई तो मुझे लगा कि they are really an underprivileged girls, those who are coming from really hand to mouth families, Right. and they need some good words. And if I will be a one medium or if I will be the one person, Right. जो One like- channel that could serve a better, exactly, that could give a hope to exactly. those girls. Yeah, or maybe guide them at least. They need some kind of guidance. So I just asked the president of that NGO that, sir, can I give one lecture, just Okay. one gupshup. One gupshup. Yeah. One gupshup. Yeah, I need some one gupshup with them, and if you like it, then allow me to give at least one in a week. One in a week. Yeah. So this is how your journey started of being Yeah. a motivational speaker. Motivational speaker, yeah. So then I started, and there are a lot of government schools around my Area. around my area. So my mom said, ki, okay, go to that government schools also, because those children also need some kind of They need some motivation. Exactly. They need more. Exactly. Because the other side, the privileged society, they Yeah. have the many channels to which could act as a stress booster. Exactly. But then they need these underprivileged people, they need more care Exactly. and good words Exactly. so that hope still survives. Yes. So Shruti, that's really interesting to know. Now I want to ask that anything in your life that really touched your heart, any incident while delivering the lecture, while going through your journey, any incident that still you find has formed that room, created a room in your In my heart. heart. Okay. I was I was I guess 16 or 17 years old. Right. So one day I wake up and I told my mom कि mom मैंने एक dream देखा है. तो mom said okay, tell me the dream. I said mom मैंने एक बहुत बड़े classical artist का एक dance performance देखा था GD1 पे रात को कुछ 11:30 बजे. Right. तो मेरे को उनसे मिलना है, मुझे उनसे डांस सीखना है. तो मॉम ने मुझे पूछा कि वो ड्रीम में आपने देखा क्या? मैंने कहा मैंने ये देखा कि मैं उनसे डांस सीख रही हूँ. Right. मैं उनसे डांस सीख रही हूँ और वो मुझे ये बता रहे हैं कि मैं एक लड़की हूँ और मैं कितनी खूबसूरत हो सकती हूँ अपने एक्सप्रेशंस के जरिए. Expressions के साथ. बिल्कुल. तो मम्मा ने मुझे कहा कि ओके वो आर्टिस्ट कौन थे? तो मैंने मम्मा को बताया तो वो मेरे गुरुजी थे पंडित बिरजू महाराज जी. Okay. तो विद इन 6 months के अंदर मेरे मदर ने मेरा वो ड्रीम कम ट्रू कर दिया. Okay. 6 महीने के अंदर मेरे लिए उन्होंने एग्जैक्ट गुरुजी का नंबर, जिनके नीचे और 3 लोग बैठे होते हैं बात करने के लिए, बिरजू महाराज बिरजू का. महाराज जी के एग्जैक्टली. Okay. तो उनके नीचे 3 लोग बैठे See, हैं. if I talk about Birju Maharaj, he is a very prominent figure. Exactly. He is a well-known personality in the world. Yes, yes. So that's something great. या तो विद इन लाइक 6 months के अंदर उनके नीचे जो 3 लोग बैठे थे उनका नंबर नहीं था, सीधा महाराज जी का नंबर था. और उनको मेरे मदर ने फोन लगाया. मेरे मदर और ने उन्होंने उठा लिया. उन्होंने मेरी मदर को बहुत तारीफ की कि मैंने पहली ऐसी माँ देखी है
जो कहती है कि मेरे कितने भी पैसे खर्च हो जाए पर मेरी बेटियों को प्लीज़ डांस सिखा दीजिएगा। तो मेरी मदर ने उसी दिन उन्होंने बोला कि कल ही हमारी वर्कशॉप है, आप आ जाइए। तो मेरी मम्मा ने सुबह ट्रेन बुक की और फट से हमें शाम को वहाँ पे पहुँचा के खड़ा कर दिया। दिल्ली या Okay. सो आई वेंट दिल्ली और गुरुजी उस टाइम पे कोलकाता में थे, तो वो फर्स्ट 2 डेज आए नहीं। उस पर जब वो थर्ड डे आए तो वो सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी थी उनको किसी से मिलने की, वो मेरे साथ थी कि कोई बच्चा अमृतसर से स्पेशल उठ के मेरे लिए आया है, उसने एक ड्रीम देखा है कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। कोई लोग नहीं तो आते हैं। Very nice. You can see, it's always said, you take a dream, Yeah. and if you believe in it, तो वो सारी कायनात आपको उस ड्रीम से मिलाने में लग जाती है। Exactly. No lines of Shah Rukh Khan, but I don't mind quoting it. I don't mind quoting it. तो वो ड्रीम कम ट्रू हो गया और अब ऐसा है कि अब मैं अपने गुरुजी के लिए मक्की की रोटी सरसों का साग हर साल लेके जाती हूँ यहाँ से बनाकर। Okay. और अगर मैं जिस साल पेंडेमिक में मैं नहीं लेके गई तो वो मुझसे नाराज थे और मुझे फोन करके बोल रहे थे कि आई एम मिसिंग दैट मक्की की रोटी सरसों का साग। Wow. Where it is? It means to such a, the prominent figure of Kathak and of classical dance, इन्होंने उनको भी टेस्ट लगा दिया पंजाब का। That's really और nice. मेरे लिए इससे ज़्यादा अचीवमेंट की बात ये थी कि वो मेरी बातें कमल हसन जो साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, Yes. या आशा भोसले जो बहुत ही बड़ी सिंगर है, वो उनके साथ शेयर करते हैं कि अमृतसर से एक बच्चा आता है मेरे लिए मक्की की रोटी और सरसों का साग। Wow, that's so तो वो मेरे sweet. लिए अपने आप में एक अचीवमेंट है। मैं जो भी उनसे Yes, सीखूं, indeed it बिल्कुल। is. See, I feel if you follow your dreams, Yes. ख्वाब ऐसे होते हैं कि अगर आप एक बारी चल पड़ो बिल्कुल। तो आपको ये पहुंचा देंगे कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। And if you have a faith in it. So this is another thing in Gupshup I would like to highlight, because I always want that Gupshup should not stay only Gupshup, but some good instances, some real stories should come out of it. So this is again a beautiful chapter of her life that she has shared. Okay, Shruti, this is one thing. Now because you are into the classical dance, लेकिन आजकल जो डांस चलता है, बिल्कुल। आजकल जो गाने चलते हैं, बिल्कुल। I equally respect all these singers, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, but the point is the generation is more, the followers are at that track. Yeah. And Kathak is something, it's difficult to watch even for people. Exactly, very true. So what you have to say about this? Because if you go for some like song Disco Deewane, so that everyone would like to do, Exactly. right? तुम कोई भी song लगा लो, सिद्धू मूसेवाले का लगा लो, they will love to do bhangra. But classical is something you need the patience to even to watch. Exactly. So what would you like to comment upon this? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है ना, हम इतने Right. फास्ट And it's more materialistic also. बिल्कुल। तो मुझे Right. लगता है कि हम सबको एक मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ऐसा पीसफुल चीज चाहिए। We need to meditate our souls, because the peace, otherwise the hustle and bustle that is going on Yeah. 24/7. Yeah. So we need some kind of we some need a kind of pause. peace, yeah, We need yeah, a peace and exactly. pause both. Exactly. Right. So मुझे लगता है कि हमें उस कारण से भी क्लासिकल म्यूजिक को, क्लासिकल डांस को थोड़ा देखना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि पहली बारी में शायद आपको वो समझ में ना आए, पर जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपकी चाहत, आपकी उसके प्रति एक इज्जत वो आपकी बहुत बड़ी है। because you were already into it during your childhood, so बिल्कुल। it's something very common that you have that respect, you have Exactly. that dedication. But a person, especially the present generations, those who are growing up in all vibrant colors of today's world, Yeah. they feel it's totally difficult for their soul to get connected to it. So what you feel is that any time will come that they will able to connect to that the spirituality or the classical image? I think they should. Yes, of course they should. and they can, because I feel कि अगर आप खड़े हो सकते हैं, अगर आप चल सकते हैं तो आप डांस कर सकते हैं, अगर आप बात कर सकते हैं तो आप म्यूजिक को भी आप गा भी सकते हैं। What I believe, क्योंकि मुझे लगता है कि डांस क्या है, जस्ट आपका इतना, जैसे गोविंदा सर कहते हैं कि आपका इतना पार्ट ही, एक्सप्रेशनल पार्ट ही लोगों को अगर समझ में आ जाए। Mr. Govinda is always with a lot of the expressions on the faces. बिल्कुल, आपके फेस के
And even expression if बता we, सकते हैं। because we are talking about the Bollywood stars, even if we talk about Rekha ji, बिल्कुल। famous that song where she's wearing the white lehenga, Yeah. in Aankhon Ki In Aankhon Ki Masti, exactly. You know, lot of expression. She's sitting over there with the, you know, a big round of the Exactly. dress that she's, the robe she's wearing. But the way she shares the expressions on the face, it's very, very appealing. Very, very appealing. And you know what? These expressions are your real expressions. You are actually while what doing you it, are you are into it. I Yeah, suppose you are into exactly, it. exactly. What you are imagining, whatever your ideas are, whatever your thought processes, it is just like, अब मुझे लगता है कि अगर आप सच्चे हैं तो आपके expressions वही बोल देंगे कि आप सच्चे हैं। Right. अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपके expressions आपसे पहले बोलेंगे कि वो अच्छा झूठ श्रुति, बोल रहे हैं। because this is now these days the functions, the marriage functions, the all the ceremonies we are having, it's you know, the variations are so much in the haldi ka function hai, mehndi ka function hai, and in this lot of gana bajana is there. Yeah. But no one go for this Kathak or you can say slow Even in the folk music. dances. Even in the folk Exactly. dances. It's all the Western culture is, you know, intruding into the culture of our own country, our roots of the state. Yeah. So what you would like to say, that is there any way that generation will come back? You feel that they'll be come back? I think they should come back. No, They that's have to okay. really- और मुझे लगता है क्योंकि उनको इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि वो हमारी roots हैं। And one more thing, you know, on that day I saw in one of the channel, and Englishman was performing the Kathak dance, you know, and I was surprised. How come this person who's a Gora, who's an English person, Exactly. a Britisher, and is enjoying it as if it's some other world, you know, he is. Exactly. So they are catching to our culture, बिल्कुल। they are catching the roots of our culture, and they value it. But we people who are sitting in this culture, we don't even look upon, you know, with that value. Our eyes don't even throw that glance in. Our perspective is completely different. Completely to what- different. Exactly, exactly. So I feel that's why I'm a motivational speaker because जब मैं बात करती हूँ तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप मेरे expression से जल्दी समझेंगे बजाय कि मेरे शब्दों Now, because we had a good chit chat for the you know, classical dance, and the rhythm was flowing in this episode. Now, because you're a motivational speaker, Yes. tell me, you meet especially the students, you know. So, आजकल किस चीज का ज़्यादा depression है? Because every time I have heard students are saying, मैं तो बहुत depressed हूँ. Depressed was a word which always we feel कि elders will have it. हाँ. But these days, even the youngsters and even the very very young students, school going students say, बहुत tension है, बहुत depression है. So, what do you feel that what's going on in today's society? I think The peace is missing. Yeah, This yeah. is one thing. Yeah. But then they are so much agitated. हाँ. The face is not at all, you know, the calmness is not there. They're not at all calm. I think the main पहले मैं सॉरी बोलूँगी कि जो मेन प्रॉब्लम का जो पर्पस है ना वो है मोबाइल। जब Yes. जैसे हमें हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना होता है तो हमें हमारे माइंड को भी डिटॉक्स करना होता है। तो Right. अगर हम हमारे मोबाइल को कुछ टाइम के लिए रखेंगे अपने से दूर और तभी हम हमारे ब्रेन को जो हमारे ब्रेन में एक पूरा एक एरिया मोबाइल ने ऑक्यूपाई किया Occupy किया है. अगर हम उसे Because निकाल के- every time you say there is a beep sound, Yeah. there is a flashlight, you see whose message, Yeah. WhatsApp पे किसका Exactly. So it's that mind is always, you know, an agitated form. It's not at all at rest. तो मुझे लगता है कि जो बच्चे मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है और अंडर प्रिविलेज बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास मोबाइल है पर उनको यही नहीं पता है कि उसमें से सीखना क्या है, देखना क्या है। तो मेरा पर्पस ये होता है कि अगर मैं उन्हें मोटिवेट करने जा रही हूँ तो मैं उन्हें बताऊं कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी Because है I feel, I'm interrupting you in between, because I feel now the present generation, all viewers must, I know they will agree to me also, because it's difficult to stay away from technology. Exactly. Technology is even taking the place of the human beings and human relationships. बिल्कुल। The time two friends used to, you know, sit and chit chat, Exactly. or have ice cream together, or you know, swing, you know, enjoying the swinging. But this is not. They never, you know, or having the. Even our mothers used to go for the walk, and young generations कितने लोग हैं जो walk के लिए जाते हैं? इवन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे नाना जी थे वो ऑलमोस्ट 4 डिफरेंट इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जानते थे, वो उनकी मैगजीन्स पढ़ते थे, उनकी बुक्स पढ़ते थे। तो Right. मुझे उस चीज़ ने बहुत इंस्पायर किया कि मेरे पास मेरी लाइब्रेरी क्या है,
मेरे पास मेरी बुक्स कितनी है, मतलब मैं बच्चों को हमेशा ये बोलती हूँ कि आप प्लीज किताबें पढ़ें. So you believe that books are the good friends, better than human beings, better than human beings. Exactly, बिल्कुल. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास मेरी डांस की लाइब्रेरी अलग है, मेरे पास मेरे नॉवेल्स की, सेल्फ हेल्प बुक्स की लाइब्रेरी अलग है. नॉवेल्स की आपने बात की, कौन सा नॉवेल that is a very जिसकी स्टोरी the storyline is very close to your heart, and you can even because normally though I read less, but yes, of course I am a bit fond of reading novels, but then once the book is read I never go for second time. But is there any book that you always feel that the story is, you can go through the dialogues and the way it's been scripted, it's beautifully written? First, I love self-help books, as I told you. Right. So, Rhonda Byrne is my favorite author. Oh, Rhonda Byrne is your favorite. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ह्यूमन माइंड पे एक अपनी रिसर्च की हुई है, जैसे वो साइकोलॉजिकली वो लिखते हैं कि आप वो अगर आप वो बिलीव करने लग जाए ना, तो 30 दिन के अंदर मैजिक अपने आप आपकी लाइफ में हैपन होगा. कोई एक चीज शेयर करो ताकि हमारे ऑडियंस को गपशप में से कुछ पॉजिटिव वाइब्स आए. तो जैसे उनकी एक बुक है द सीक्रेट. ओके. उसमें उन्होंने लिखा है कि पहले आप द आस्क, बिलीव एंड रिसीव, मतलब आप यूनिवर्स को आस्क करिए कि आपको क्या चाहिए. आपको क्या चाहिए? What exactly your soul wants? Exactly. What your soul desires for? Exactly. अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा ये इंटरव्यू एटलीस्ट बराक ओबामा से लेके बाइडन तक लोग देखें, right? तो ये मैंने I'm so happy to listen. It's something. Wow, I'm in the air, up in the air. See, Mr. Obama, I'll be really very happy, and please surely subscribe the channel and the interview. Subscribe, comment, like, because she's so confident. Mr. Barack Obama gonna watch this interview. So, Mr. Obama, before our PM watch it, you please do like it. Thank you so much. So if I want this, मैंने ये यूनिवर्स को भेज दिया है, और ये मैंने यूनिवर्स को भेज दिया है, दैट मीन्स मैंने अपना एक रेस्टोरेंट में बैठ के अपना एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है अपने वेटर को. ठीक है. अब मैं बार बार नहीं पूछूंगी कि आपको मेरा ऑर्डर मिला कि नहीं. अब मैं ये भी नहीं पूछूंगी हाउ इट कैन बी पॉसिबल. अब ये मुझे बिलीव कर लेना है कि ओके, बराक ओबामा ने मेरा इंटरव्यू देख लिया. Right. I have to believe Mr. Barack Obama must be feeling the lady is really beautiful. Yes, and Mr. Obama, I tell you, you will get such beautiful minds and beautiful souls. The max in Punjab. Our state is full of talent. Exactly. So you have to believe it. Whatever you are dreaming, you have to ask it and you have to believe it. Your body language. So it means that you need to learn to receive those signals that exactly. that are specially meant for you. Exactly. You have to believe it, then automatically you're going to receive it. Right. If I want कि okay, Barack Obama wants like वो ये मेरी इंटरव्यू देखे, तो ये मेरी बॉडी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि उन्होंने ये इंटरव्यू देख ली है. I'm automatically a famous one. Right. Yes, she is indeed famous one. You know. Not at all. So this is what I have learned, right? जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपको रिलेशनशिप की अगर जैसे बात की है उन्होंने, रोंडा बर्ने जी ने, उन्होंने बोला कि आप जिसको चाहते हैं, सपोज करिए आप अपनी और उसकी फोटो लगाइए. फोटो लगा के अगर आप अपनी फैमिली देखते हैं तो वहाँ पे वो बच्चे भी पेंट करिए. आप जो चाहते हैं आप वो पेंट करके अपनी आंखों के आगे लगाइए. सपोज यू वांट मनी, पेंट दी मनी. ओके. यस, पेंट दी मनी. बड़ी आसान बात है. चलो भाई, जो अमीर होना चाहता है फटाफट बहुत सारे नोट्स आप पेंट कर लो, जल्दी से आ जाएंगे. क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि आपका ड्रीम आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, तभी आप रोज उसे बिलीव कर पाएंगे. ये कह देना कि मेरा ड्रीम पूरा होगा, नहीं, वो हो चुका है. होना और हो चुके होने में दो बहुत डिफरेंस है. तो ये मैं बोल. But then it is a more big and the most difficult thing is that is to believe. Yes, you have got it. Exactly. Or you are very close to it. You can easily get it. जब मुझे मोटिवेशनल लेक्चर्स देने थे तो मेरी मम्मी ने कहा कि आप बिलीव कर लीजिए कि लोग आपको सुनने वाले हैं. Because this is the one thing कि even sometimes when I go for the gupshup show, यार इसको किसने देखा होगा. But now I am very much confident, Mr. Obama, you will be watching this interview, and I am really privileged that you will be watching this interview, and I hope that you will like also. So that's something very nice. Okay, Shruti. Now tell me, I suppose it was a very great message giving session that we had. Shruti, everyone is having a dream. There is a dream world is existing, especially with the girls. So आपके dream में
वो Prince Charming will come on the white horse and will ask you for the hand. इस सारा कैसा dream है? My Prince Charming already rejected me. Rejecting you means? Yeah, exactly, rejected me. I have asked him for a marriage proposal. He rejected me. Oh, पहले किस्मत खराब है. You rejected me. Also on my page. Oh, this is something very bad. Whosoever he is, your heart rest in peace. R.I.P. Your heart rest in peace. But one day you will realize, Mister, that you know, a golden chance skipped from your hands. और पता नहीं कौन सा शहजादा है कुड़ी लेकर जाएगा पर जेड़ा ले लेगा पाई तू रोंदे रहने बाद. Sorry, but I see everyone has got a different choices. I don't say, but yes, she is a diamond. She's a diamond, and I'm Thank really enjoying the interview session. Thank you. Same here. So it was wonderful session with you, dear. Same here. And I hope you must have enjoyed Gurseema's Gupshup and Friday the Guest Day. Next week, again I'll be here with the same show, but a different story and different personality. Thank you so much. Take care. Keep smiling and dive deep into your heart. और दिल से पूछो तुम्हें क्या चाहिए और जो चाहिए उसके लिए चल पड़ो. Thank you so much. Thank you. Thank you.